हुई। सभी को सादर नमो बुद्धाय और समन्वय सेवा संस्थान और हमारे अन्य सहयोगी संगठनों की तरफ से इसमें शामिल हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आई वेलकम टू द ऑल द पार्टिसिपेंट्स। क्या करेंगे? I welcome all the participants of this meeting who had joined from USA and our special guest, Sister Wangmo Dixey and Dr. Richard Dixey ji. You all are welcome in this meeting. As per our tradition, we will start the meeting by Trishran and Panchasil. So I request to you all kindly hold your hands and just remain 1 minute silence. After that, we will chant the Trishran and Panchasil. तो आप सभी से अनुरोध है कि सभी लोग कृपया 1 मिनट के लिए शांत हो जाएं और उसके पश्चात फिर हम लोग तीसरण और पंचशील के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कृपया आप लोग अपने मोबाइल में जो माइक है इसको म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज इको आएगी। जिनके माइक ऑन है कृपया उसको ऑफ कर दीजिए। और आप सभी जिनको चैंटिंग कृष्ण और पंचशील पता है वो सभी लोग साथ में इसका संगायन करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अनिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। आज की इस मीटिंग में उपस्थित आना फाउंडेशन यूएसए से श्री मेश्राम साहब, इसमें ज्वाइन किए हुए यूएसए से विजय विश्वकर्मा जी, भारत से समन्वय सेवा संस्थान के अध्यक्ष
और हमारे समन्वयक आदरणीय श्री राजेश चंद्रा जी, श्रीमती किरण बाला चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार की जो सूचना आयुक्त हैं, और हमें ऐसा अभी सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग के महानिदेशक श्री मेश्राम साहब भी अभी मीटिंग में जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर वांगमो डिक्सी जी, डॉक्टर वांगमो डिक्सी ये भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का और बाकी हमारे जितने भी संस्थान के और भी मेंबरान इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। So we welcome you all who have joined this meeting. So in our meeting there is no bhikkhu, so we'll directly start our meeting. हम लोग अपने इस मीटिंग की जो रूपरेखा है, इसमें सर्वप्रथम हम अपने संघ नायक समन्वय सेवा संस्थान के जो प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं, श्री राजेश चंद्रा जी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आज की इस मीटिंग के बारे में, जिसके लिए इसका आयोजन हुआ है, कृपया इसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय सभी लोगों को दीजिए। रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट ऑफ समन्वय सेवा संस्थान श्री राजेश चंद्रा, प्लीज कंक्लूड अबाउट दिस मीटिंग एंड गिव the introduction about the संकल्प समारोह। श्री राजेश चंद्रा। तो आज के इस कार्यक्रम में अभी हमारे साथ बनते प्रशील जी जुड़ गए हैं संघ काया फाउंडेशन से, और अभी भी जुड़ गए हैं। जितने लोग भी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, समन्वय सेवा संस्थान की सभी इकाइयां प्रतापगढ़, कानपुर, झांसी, बरेली और लखनऊ, उन सभी इकाइयों के पदाधिकारी, और हमारे साथ अतिथि के रूप में जुड़ी हुई डॉक्टर रिचर्ड डिक्सी और डॉक्टर वांगमो डिक्सी, नाउ शी इज डॉक्टर, एंड अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से पंकज मेश्राम जी, डॉक्टर शीतल मेश्राम जी, और विजय कुमार विश्वकर्मा जी, और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती किरण बाला चौधरी जी, और मुकेश कुमार मेश्राम साहब अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वो अभी और कार्यक्रम में हैं, उनसे समय निकाल के जुड़ेंगे, उनका ऐसा मैसेज आया है। और हमारे साथ जुड़े बनते प्रशील जी, संघ काया फाउंडेशन के चेयरमैन, और सभी इकाइयों के सभी सदस्य। हम आप सभी का पहली बात तो बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और सर्वप्रथम आज नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को देते हैं कि ये नया वर्ष आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। Again, just I will repeat few words in English. Our guest today, Dr. Richard Dixey and Dr. Wangmo Dixey. Now she is doctor and State Information Commissioner who visited Bodh Gaya also during the chanting, and she was already there at Bodh. She is here with us in this meeting, and very much welcome. And now Mr. Tushar Mohite has also joined, IRS from Pune, Mumbai, and Baba Sir Dr. Ambedkar International Association for Education, Japan, Rashmi. All members, I welcome you all. And first of all, I want to say Happy New Year. This special meet is especially to wish you Happy New Year, and we all decided to start this meeting this year, 1st January of 2023, with a determination, with a resolution, as we have resolved it under the Bodhi tree at Bodh Gaya,
that India is going to organize International Tipitaka Chanting in the year 2025 and 26. As 2026 is going to be 70th year of adoption of Buddhism by Baba Saheb Dr. Ambedkar and his followers, lakhs of people, and it's now almost the third generation, and currently the second generation who adopted Buddhism in India with the revolution and the renaissance of Buddhism by Bodhisattva Baba Saheb Dr. Ambedkar. तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बुद्ध धम्म को अंगीकार किए हुए उनके अनुयायियों के साथ अभी 70 साल पूरे होने को हैं 2026 में, और पिछले 18 साल से ये इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग भारत में हो रही है. वी मस्ट थैंक यू and we must be grateful to Sister Wangmo Dixey and Dr. Richard Dixey, who are the pioneer person who initiated international Tipitaka chanting under the Bodhi tree at Bodh Gaya in India, and they are doing such sacred mission-like work since last 18 years. And since last 18 years, many other countries are organizing it. This current year, Vietnam was organizer. For coming 2 years, Cambodia will be organizer. Likewise, Thailand has been organizer. But in the last 18 years, India has never taken this responsibility that we should organize this international Tipitaka chanting. पिछले 18 सालों में विभिन्न देश भारत में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन के आयोजक देश होते रहे हैं और आज तक ही भारत नहीं हुआ है. हम सब ने अभी बोध गया में बोधि वृक्ष की छांव में ऐसा संकल्प लिया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जब धम्म दीक्षा के 70 साल पूरे हो रहे हैं तो 70 साल की परिपूर्ति पर 70 साल 2026 में पूरे हो रहे हैं. तो 2025 और 26 का आयोजक देश भारत होगा. इस संकल्प को हम आज, मैंने आना के मेंबर से अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कल उनके साथ हमारी बातचीत हुई और मैंने उनसे विशेष रूप से निवेदन किया कि आज की हमारी इस मीट को रिकॉर्ड में लिया जाए ताकि हमें अपना संकल्प याद रहे कि हम इसके आयोजक देश होने वाले हैं. और जो परिकल्पना हमारे मन मस्तिष्क में चल रही है, जो हमारा इंट्यूशन, हमारी रितंभरा कह रही है कि जिस तारीख से अभी इस साल वांगमो डिक्सी मैडम ने और डॉक्टर रिचर्ड डिक्सी ने वहां पर इसकी घोषणा की और जब ये वहां पर घोषित हुआ तो अचानक से पूरी दुनिया में एक संदेश चला गया कि भारत 25 और 26 में आयोजन करेगा. वहां पर विपස්සना के गुरु गोयनका की बहू नैना गोयनका जी भी मौजूद थी और वो इस बात से बड़ी खुश थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोई विशेष तिथि आने वाली है जिस तिथि के लिए भारत के लोगों ने आयोजक होना स्वीकार किया है. विपස්සना के ग्रुप को भी एक संदेश गया है कि भारत आयोजन करेगा और हम ऐसी परिकल्पना कर रहे हैं कि जिस दिन भारत इसका आयोजन करेगा ये एक वैश्विक खबर होगी, एक अंतरराष्ट्रीय खबर बनेगी और सारी दुनिया को मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा कि हम भारत के लोग जिस देश का धम्म है, जिस देश के बुद्ध हैं, वो अब तैयार हो चुके हैं. और ये संदेश जैसा कि हम देखते हैं 5वीं और 6ठी संगीति के बीच में जो अंतराल है, 5वीं संगीति 1871 में हुई है बर्मा में और 6ठी संगीति अगर हम 100 साल का अंतराल लें तो 1871 और 6ठी संगीति होनी चाहिए 1971 में, लेकिन 6ठी संगीति 1954 में हुई और 1956 तक चली. 100 साल से भी कम अंतराल पर 2 संगीतियां हुई.
हम यदि इस तैयारी में अच्छे से लगते हैं, हमें उम्मीद है कि भारत जिस दिन त्रिपिटक संगायन का आयोजक देश होगा, सारी दुनिया को संदेश जाएगा, भारत रेडी है, इंडिया इज रेडी नाउ, और भारत में अगली संगीति की घोषणा हो सकती है। जो हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की परिकल्पना थी, भारत को बुद्धमय बनाना है। अभी हम खाली इस परिकल्पना को बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन हम इस परिकल्पना को अपने जीवन काल में साकार कर सकते हैं, इस आयोजन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर। तो आज के इस मीटिंग का मुख्य जो ध्येय है वो इसी मकसद से है, और इसीलिए कि हम 1 जनवरी को ये संकल्प लें, और इस संकल्प में लोग अपने अपने कमिटमेंट दोहराएंगे। हम लोगों के कमिटमेंट पे बात करें, इसके पहले हम अपने आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय श्री मुकेश चंद आनंद जी से अनुरोध करेंगे कि वे बहन वांगमो डिक्सी और डॉक्टर ऋषि डिक्सी को भी इस आयोजन के लिए इन्वाइट करें, और उसके पहले कमिश्नर महोदया जो किरण बाला चौधरी जी हैं, वो अपने अनुभवों को साझा करते हुए सभी लोगों को नए वर्ष की मंगल कामनाएं दें। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। Once again, you all are welcome. As our president of the Samanvyay Sewa Sansthan, Shri Rajesh Chandra sir, told about the Sansthan determination about the chanting, international Tipitaka Chanting program. Hello. Will be organized by the Unions Association in 2025-26। तो हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जैसे हमारे संघ नायक ने बताया कि 2025 और 26 में जो अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन होगा, इसका आयोजन भारत की तरफ से सिस्टर वांगमो डिक्सी और हमारे धम्मा ब्रदर डॉक्टर रिचर्ड डिक्सी जी के नेतृत्व में भारत के सहयोग से यहाँ पे कराया जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग बोध गया गए हैं, और वहाँ का जो परिवेश है वहाँ पे हम लोगों ने सबने ध्यान किया है, और वहाँ पे एक पवित्र संकल्प लिया है। हमें ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच श्रीमती किरण बाला चौधरी जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य सूचना आयुक्त हैं, वो मौजूद हैं। और इस साल जो 2 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक त्रिपिटक चैंटिंग हुई थी, उसमें मैडम वहाँ 2 दिन थी, और उस त्रिपिटक चैंटिंग को उन्होंने बहुत ही गहराई के साथ देखा, बड़े गहराई के साथ अनुभव किया। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो संक्षेप में अपने अनुभवों को साझा करें, और उनकी 2025 और 26 में वो किस रूप में देखती हैं कि भारत के लोग अगर त्रिपिटक संगायन का आयोजन कराते हैं तो उसमें हमें हमारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी, और उसके लिए हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी होंगी, इसके बारे में उनके अपने क्या विचार हैं। तो मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि कृपया संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें। आई रिक्वेस्ट श्रीमती किरण बाला चौधरी मैम काइंडली discuss his vision about international Tipitaka chanting program, and also his experience which she has gained in the last Tipitaka chanting program at Bodh Gaya. Madam Kiran Bala Chaudhary. हाँ, मुझे क्या सब लोग सुन रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? जी हेलो, जी 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 हाँ सुन पा? हाँ, नमो बुद्धाय आप सबको। नमो बुद्धाय। हेलो, नमो बुद्धाय बहन जी। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ, जी सुन जी पा रहे जी जी जी, आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम है,
आप आज 9 वर्ष की 9 वर्ष की बेला पर हम सब लोग मिले हैं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं प्रथम बार राजेश चंद्रा जी के सहयोग से मैं बौद्ध बुद्ध भूमि पहुंची थी, और मैं 2 दिन वहां रही, और मुझे बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और बहुत ही अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर। वहाँ इतना अच्छा था कि इतने देशों के लोग वहाँ आए हुए थे, लेकिन कोई भी डिस्टरबेंस वहाँ नहीं थी। और मैं आप संक्षेप में बात हो रही है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं प्रथम बार आप लोगों से जुड़ रही हूँ, और आगे भी मैं इसी तरह आपके साथ रहूंगी। और राजेश चंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो 2026 में भारत अपना इसका नेतृत्व करेगा, उसमें मेरा जो भी सहयोग होगा मैं निसंकोच उसमें प्रतिभाग लूंगी, और मैं इसके लिए आगे भी बात करूंगी। धन्यवाद। साधु 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 साधु। सिस्टर किरण बाला चौधरी ने अपने जो अनुभव थे, उन्होंने जो वहाँ पे पीस का एक्सपीरियंस किया, जो वहाँ उन्होंने शांति का अनुभव किया, उसके बारे में हम लोगों को बताया। हमें याद आ रहा है कि जब मैडम वहाँ पे थी मौजूद, और वहाँ पे धम्मकाया फाउंडेशन के चेयरमैन, संघ काया फाउंडेशन के चेयरमैन वेनरेबल भंते प्रसील जी भी वहाँ पे उपस्थित थे, और भंते जी ने उनकी बेटी को आशीर्वाद भी दिया था। और भंते जी ने बताया कि ये संकल्प भूमि है, जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपके किसी लिए हुए संकल्प में कोई कमी आ रही है, तो बस इससे एक प्लेस पे पहुंच जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा संकल्प था और जो सबसे दुरूह बात थी, मार्ग को हराया था भगवान ने, वो इस भूमि पे घटित हुआ है। तो सबसे बड़ा संकल्प वो पूरा हुआ है। तो हम संक्षेप में, हमारे बीच में भंते जी, पूज्य भंते जी उपस्थित हैं। पूज्य भंते जी पूरे भारत में, बल्कि कहें पूरे विश्व में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और आप का बड़ा अच्छा वर्क है भिक्षु संघ के लिए और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि वो हमारे बीच में हैं। हम संक्षेप में चाहेंगे कि भंते जी इस विजन के बारे में अपने कुछ जो सुझाव हैं या जो उनका प्रोग्राम है वो सोचते हैं, जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, उनकी पावन उपस्थिति में लिया था, वो थोड़ा सा अपने अनुभव भी शेयर करें, और हम सबको आशीष वचन देने के साथ साथ वो अपनी योजनाओं के बारे में, इस कार्यक्रम विशेष के बारे में बताने का कष्ट करें। सो वी रिक्वेस्ट वेनरेबल भंते प्रसील जी kindly discuss his experience about the Bodh Gaya function Tipitaka chanting program, and also give some ideas when we'll in the position to organize this chanting. Venerable Bhante Prasil ji. Bhante, I am sending you a request to unmute. You are unmuted. You please go ahead, Bhante. Bhante, we are able to see you, but not able to hear you yet. Bhante, क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं Bhante? Bhante, आप अनम्यूट कर सकते हैं Bhante? Please try. उधर रखा है ना, वहाँ पे देख लो। नहीं तू देखो, इधर देखो, देखो तो हाँ देखो, अभ्यास कर। Bhante,
Yeah, yeah. Now I'm accessed with another one phone. Yes, Bhante. Okay, Bhante. Yeah, Yeah, we yeah. can hear Can you. you hear me and can you listen me? Yes, Bhante, we are able to hear you, Bhante. Yeah, Go first ahead. of all, nice to see you, all of you here on this wonderful platform, and wish you a very happy New Year to all of you, those who are listening to me. And today I'm really glad to see all of you and the platform which has been created for spreading the message of Lord Buddha and the lover from across the world are united here. And Dhamma is also gives us a strength to unite the people, not to divide the people, and to spread the message of love, peace, and compassion. So this movement has been started by our most respectable sister, Wangmo Dixey, and she's really appreciated. Her work is really appreciated toward the Buddhism, toward the spreading the Buddhism. And I'm also really appreciated to her and Mr. Richard Dixey and her team. And recently she got a PhD from Bangkok. So first of all, I'm congratulate to her. And now I just reached to Agra, from Lucknow to Agra. So I was with Rajesh Chandra in Lucknow. So we had a discussions about how to organize this Tipitaka chanting. So I'm always with Rajesh Chandra ji and Wangmo Dixey ji. So you should order me. So what should we do? So I'm always with you. And how we can organize, we can make one committee and we can work together, and we'll give a good message not only to Indian Buddhist and non-Buddhist people from across the world. We will give the message through this Tripitaka chanting. So I just want to share my best wishes for this upcoming future endeavors. Thank you. So thank you, Bhante ji, for your words in the meeting. और Bhante जी के बारे में जैसे हम लोगों ने बताया कि Bhante जी के अंदर बहुत ही ऊर्जा है. He is very energetic person and he is doing very well to for the study of Buddhism as well as the social work. तो Bhante जी के हॉस्पिटल बनवा रहे हैं. Bhante जी एक हॉस्पिटल बनवा रहे हैं विशेष रूप से भिक्षुओं के लिए नागपुर में. और हम लोगों ने भी ये संकल्प किया है कि Bhante जी को उसमें यथासंभव सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक सहयोग हो सकता है. और हम सबके लिए बड़ी गौरव की बात है कि इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग के प्रोग्राम को जितने हमारे बुद्धिस्ट प्लेसेस थे उसमें 5 स्थानों पे उसका आयोजन कराया. और उत्तर प्रदेश सरकार में जो इसकी मुख्य भूमिका निभाई वो पर्यटन विभाग के महासचिव श्री मुकेश मिश्राम साहब. मुकेश मिश्राम साहब के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय उनको देना चाहूंगा कि एक IAS ऑफिसर होते हुए भी सर की धर्म के प्रति इतनी गहरी रुचि है. और सर सोशल वर्क के बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ. ऐसे तैसे सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी. बस आप इतनी समझ लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं कि सर जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जिलाधिकारी हैं, जब उनका ट्रांसफर वहाँ हुआ है तो लोगों ने पूरे जिले को जाम कर दिया. ये इस IAS ऑफिसर को, इस DM को हम अपने यहाँ से जाने नहीं देना चाहते. तो ऐसी उनकी निष्ठा है और बहुत ही जो धम्म के लिए काम करने वाले लोग हैं उनको बड़ा एप्रिशिएट करते रहते हैं. हमारे बीच में सर मौजूद हैं. हम सर से अनुरोध करेंगे कि कृपया वो आए और थोड़े से अपने अनुभव के बारे में शेयर करें और हम लोगों को कुछ अपना मार्गदर्शन भी दे कि हमें कैसे 25-26 का जो प्रोग्राम है उसमें हम ऑर्गेनाइज कराने के लिए क्या हम लोग और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, हमारी कैसी योजनाएं होनी चाहिए. और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हम सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामना भी दीजिए और आपको हम सब की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. श्री मुकेश सर. मेरे पापा मन कहाँ आई हैं? अरे बोल रही क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल wishing you everybody who has connected with this webinar happy new year. This new year
certainty, bring happiness, peace, prosperity in your life. And Lord Buddha will shower the blessings upon all of us with so many gifts by his benevolent preachings and teachings. Buddha, and particularly his Dhamma, is the need of the hour for the whole humankind. In that sense, we have to basically spread out his teachings, the elements and principles of Dhamma are they're available in the scriptures, Buddhist scriptures. But first, we have to learn about the basics or the fundamentals of Dhamma, because then only we would be able to throw upon the light on the basic essence of Dhamma. So always I think that we are still in the process of learning, because it is so deep. It's like ocean of knowledge, wisdom, that we are actually touching upon the first level or the tip of that. So this knowledge has to be collected, engrossed, then it has to be dispersed out to the whole world. So all the people who are connected with this conference, teleconferencing, I think first we all have to be connected. There should be a kind of bonding with certain thread, which is Dhamma, Sut. And through that, we will further be able to basically help out each other, join each other. And then through this knowledge, we can move ahead. So thank you very much, Dr. Rajesh Chandra ji. He has always been Sutradhar or connecting person for this particular conference. On and off, I have experienced that the zeal, the kind of energy he's having within him is unparalleled. And we all also get such kind of energy, which he must have collected in the previous years by learning Dhamma and Buddha's teaching. So we also try to reach to that level, because there is a lot of potential among everybody. But one has to realize his own potential. And the best way or path of this learning is Dhamma only. So again, wishing everybody healthy, wealthy, and prosperous New Year with karuna, empathy, with wisdom, pragya, knowledge, and with peace, shanti. Thank you.
बहुत बहुत आभार सर, आप हम सबके लिए हर सदैव से इंस्पिरेशन रहे हैं सर, और जो आपका सहयोग है धम्म के लिए, मैनकाइंड के लिए, इनफैक्ट पूरे समाज के लिए जो आपका सहयोग है और पूरे मानव समाज के लिए जो आपका सहयोग है, वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। As sir told that we all have to be connected in the future also, and the binding of Dhamma should be the main feature of our relation. तो सर की ये बात हम लोग अपने पूरे जीवन में लाएंगे, कनेक्ट भी रहेंगे, और जो धम्म का मार्ग है इस पे आगे हम लोग चलेंगे। इन सभी आशीष वचनों के साथ में we request Sister Wangmo Dixey kindly address us, and she has a very deep and very great and very big vision about the Dhamma, because she has been organizing this international Tipitaka chanting program since 2002. So she has many things, many experiences. We request her kindly kindly give us some thought, kindly give your thought to us also, so that we can take this responsibility of organizing this chanting well. And as our president Chandra sir has told that you have awarded a PhD degree from Thailand, perhaps Thailand. So many congratulations to you, ma'am. Sister, we request you please address us. Sister Wangmo Dixey. Thank you so very much to all of you, Venerable from Gujarat, Venerable Prashil Gautam, and also most respected Mukesh Mishram and Rajesh Chandra, and all friends in Dharma. It is lovely to see you on this New Year's Day. Actually, it's a little early here where I am. I'm in Northern California, and it is just about 6 o'clock in the morning. So a very good morning from you from the States. Actually, it is so wonderful that on this New Year's Day, that we all come together through this cord connection through the Dharma, as Mukesh Mishramji has just mentioned. I actually have a lot to say about the importance of this program. And it is actually a very emotional moment for me personally to know that India is very enthusiastic about taking the lead as the chief organizer after Cambodia. I actually, right after this year's Tipitaka chanting, I had to leave a little early to go to Thailand to receive this award, and then to move to Cambodia to meet with the most senior monks, the Sangha Council, and all of their respected venerables and lay people, to hand over to them the responsibility for 2023 and 2024, because every country has a chance to organize for 2 years. So I had heard from various whispers when especially from Rajesh Chandra, that India would like to come up after Cambodia in 2024. Actually, I believe it's 2024 and 2025.
especially in relationship to the anniversary that may fall in 2025. So when I heard this news, I was a little shocked and a little bit more than happy. Perhaps the first emotion is just the sense of great news for all of us, because we have been waiting for this moment. It would be in the 20th year that that India would be stepping forward. Now, why it brings so much emotion and great joy and also a little bit of sadness is because after a gap of 700 years, and we know our history, that these places that the Buddha walked and taught, well, now more than 2,600 years, but this was a very alive environment where there were great sanghas reciting the words of the Buddha in these holy places. And so it is in a way reviving and reawakening the words of the Buddha in Pali through the International Sangha, but our main purpose has always been to bring it back to the motherland of India. It has always been to revive it in the heartland where the roots of the Dharma began. Now, I'm in America, so I have learned about the Buddha, Dhamma, and Sangha in kind of almost like a distant memory of our motherland, India. And so at a very early age, I would visit Bodh Gaya and these holy places. And year after year, it gives great faith and devotion to go back to these places, the land itself, the people, and the natural environment that all of these great teachings took birth. So it's so wonderful to hear that in the first day of 2023, that all of you who are gathered here are hearing about this intention for India to come up as the chief organizer after Cambodia. Now, it means a lot of work, and Cambodia is very excited about what they have to do, and they're already starting to prepare. But I'm happy to hear that India will be planning now for 2 years. And why it will take big work is India is a very big country with many, many different organizational groups. And we hope that with this kind of a program, one of the benefits will be to unify, to bring us all together on a common platform of reviving the Buddha Dharma in the motherland of India. Now, I've had a chance over the last several years to take monks to various places with a Dharma training wheel. In fact, Mukesh Mishramji was so kind to collaborate and to help to organize these conclaves that took place in Lucknow and various places within UP. But we also went to places like Ajanta and Ellora, to Nagpur, and of course, all of the other 8 sacred sites. So India has many, many different sacred sites, and we wish to bring us all together on this common platform of the Buddha Dharma, and to bring the various sanghas that have been disunited, have been disconnected, and with the power and the blessings of the Buddha Dharma under the Bodhi tree, it brings us together. It has great, great power. And sometimes the monks say, how do you do it?
It's nothing to do with me. I am just a servant. I'm just a service in service of the Buddha Dharma, but it's the power and the blessings of the Dharma. And as lay people, we have a duty. It's like we do this in the name of the Buddha. We do this in the name of the Dharma and the precious Sangha that are still with us. Now, I know that there are many different groups, and part of the challenge will be to bring us together when we are not united. Another challenge, of course, I think when India comes up, there will be lakhs of people. Up to now, with the international Tipitaka, we've had at the highest number, maybe 7,000 participants, and most of them are coming from the 11 countries, of course, including India. But for the majority, the other international countries have played a big role. But I do believe that if India does come up, there will be many numbers of Indians who will come. So we have to be prepared for that. How do we take care of them? In the 10 days that we are there, we offer the food. In some cases, for the VIP guests, we offer them the accommodation. So there are things that we have to think about, as well as to have our special guests who are representing the country of India to speak on behalf. Of course, this past ceremony, we had the former president of India, and how amazing was that to have such a dignified official speak to all of us and to the international delegation on behalf of India. So these kinds of things will be worked out, and there's much to discuss, but thank you so much for giving this opportunity to share. There will be many conversations that we will have over the coming months and years, and this is the beginning for us to work together. And I truly believe that by working together, it connects us in Dharma. We're not doing anything else but reviving the holy words of the Buddha Dharma that are contained in the Pali Tipitaka, the 3 baskets. And so for 17 years, now we have completed the Sutta Pitaka. And the reason why it took 17 years is that each year, each country takes about 60 to 80 pages. And we know how many pages are left. So this project is another 25 years. That would complete the entire 84,000 teachings in our lifetime under the Bodhi tree, connected by Dharma. So this is our gift, our memory, in the name that the Buddha's teachings, the voice of the Buddha, remains alive and strong in India. Now, all the other international countries have so much to be grateful for the Dharma spreading from India to these other foreign lands, which is why they come in such great numbers. So when India is taking the leadership, it is a great sign for us. It's almost like a sign, a golden period, maybe, for India to take such a intention to connect with Dharma brothers and sisters throughout India, so that we don't forget the greatest treasure that India has, the greatest treasure. So I like to ask my husband and my great, someone who can also speak about why this is important. So you can hear from Richard. If you don't mind, I will ask him to please say some words about why this is important, this moment coming together. Actually, I'm up north in the mountains and he's in Berkeley.
So we're saying hello to each other on New Year's Day. So Richard, please, if you don't mind, please go ahead and speak some words too. Well, thank you, Wangmo, and welcome to everyone here on this call. It's very inspiring to see such enthusiasm. I think Wangmo got her dates a bit wrong. It'll be 2023 and 2024 are Cambodia, and 2025 and 2026 will be India. And these 2-year periods are set out in a constitution, which I think it will be very good for all of you to see, actually. And it's because although we are help with the organization every year, the International Tipitaka Chanting Council is actually run under the auspices of the ITCC, the International Tipitaka Chanting Council, which has members from every country. And it's run by a constitution, and there's a website for it. I was just looking for it before I came on to talk. And the website is Tipitaka Chanting Council.org, Tipitaka Chanting Council, or one word, .org. And that has the constitution of the ITCC and how it actually runs. And as one was said, we're very, very excited by the idea that India will come on as an organizer. This, as she said, has been our wish all along. This is what we're about doing. And what's really important is we try as hard as we can, as Wangmo mentioned, to bring the Indian Sanghas together, because our experience in India is that there are many Sanghas, and some quite large, and often they have vague ideas about each other, but really not much, because India is a huge country and there's, often not much communication between one group and another. So we have floated the idea before. Actually, Rajesh offered to try to organize 25-26 enthusiasm. There was already an idea we had to have a conference in Bodh Gaya, maybe every other year, where we try to help bring together Indian groups. And I suggest we do work on this as well, perhaps holding a conference in Bodh Gaya, not next year, but in 2024, which will be a year before India begins organizing in 2025. So it'll be a very good platform to really begin the final work of organizing the event, because obviously we're a long way off yet. We're still 3 years away from when India would be organizing. So I think that's something to work on as well. And then to try and create some kind of structure so everyone can work together well, and some kind of committee needs to be formed. And again, it's worth mentioning that the actual ITCC member on the council is Bhante Prajnadeep from the All India Bhikkhu Sangha. So there's another group we need to involve. And, there's going to be quite a lot of organizational work, but it's very, very inspiring to see this much enthusiasm so early in this process. And, we're really, really excited by what will happen, because as Wangmo said, we expect if India organizes, there will be lakhs of Indian people, and this can be done in Bodh Gaya. There is an event happening right now with the Dalai Lama where over 100,000 people are present. So it can be done, but we need to think about it carefully and make sure that we don't overwhelm the event. We need to really have all this planning to be done. So really, well done. I'm so happy this is happening. And it's very, very inspiring for us, because, this has been a 17-year trek to get to this moment. And, we're very, very inspired that you're coming forward. And so with those comments, I'll hand the mic back to Rajesh, I guess, who's the chairman of the thing. And thank you again. Sister Wangmo Dixey, would you like to say something about Dr. Richard Dixey's address? Oh, thank you. I'm sorry about the confusion of the dates, but just to think it out loud, 2023 December is Cambodia, and 2024 December is Cambodia. So it will still be 2024
Is that right? No? No? Okay. Okay, sorry. I'm confused with the date. It'll be So it'll be 2025 then, won't it? Because it'll be Cambodia 2023, 2024, and then India 2025. okay. Okay. Sorry, the numbers are the numbers are a little confusing for me. We're 2 years out. So it will be the 20th ceremony. I can say that for sure. And the ceremony always happens in December. It's a fixed date, December 2nd through the 13th. And India would be on the 20th. So it would be the 20th time that the ceremony would be held. 20 and 21 would be India. But as far as what Richard said, everything is correct. We will need to work with All India Bhikkhu Sangha because they are the ITCC representative, but they're a very large organizing body. So we can work through that organization. But I imagine that we're going to see a large number. And as Richard said, that right now, His Holiness Dalai Lama has close to 100,000 participants. And I am watching it online, and the Kala Chakra that we just used is filled all the way from the front stage to the end of the boundary wall. So it is possible. And how we manage that is going to be the big work, and also just gathering all of us together from India. So we should be having a kind of committee and different states within India. I'm very happy to see Venerable Prashil Bante from Gujarat. I know he's organized before large conferences. So we'll be able to connect all the states within India. It's very exciting. And to have cultural performances maybe of each state to show the international world why India is the heartland, the motherland of the Buddha Dharma. This will be a great moment, and so many people will be rejoicing and saying sadhu for that moment. So Rajesh, our Dharma brother here, he had the first announcement whispered into our ears that India should take that responsibility. So really, Rajesh, may this inspiration connect us all together, and we work in the name of the Triple Gem. And that's why we are here. We are also working with you together. It's a collaborative process. And I always say to anyone that I am just a servant or a service in the service of. So I'm so delighted to meet all of you. And handing back to you, Mukesh. Thanks to you, sister, for your address to us in this meeting. In the words of Lord Buddha, for a lay person, it is very difficult to serve the Venerable Sangha and to arrange the various things which is needed to the Sangha, and you are doing this unconditional, without any expectation. Your work always inspires us, and we are also thinking in this direction since last 20-25 years that India, the next council should be in India. So we were thinking about this thought since last 25 30 years back, and by seeing your work, we are very much inspired that this is going to be happen. And as our leader Rajesh Chandra says us that I don't know whether we'll be alive or not, but our children, our grandchildren will be here to see the words of Buddha once again in this pure land. So, sister, lot of thanks, and thanks to you. And
I would like to announce that tomorrow will be the Rajesh Chandra sir birthday also. So you may also congratulate him. Oh, yes, a very, very happy birthday to Rajesh, a very long life and full of blessings of the Dharma, and all of your friends here who are supporting you in your aspiration, and nothing more with depth than the teachings of the Buddha Dharma. As we heard earlier, the Dharma is so deep, and we can go very deep with it. And so our life can be connected to the Dharma and make our life so rich and so precious. So Rajesh, may you have a very long life in service to the Dharma. And it's many, many good wishes for tomorrow, and your wife and your son, your family all together. Thank you, sister. Thank you. ये वो खोल ले। मुकेश जी आप म्यूट पे हैं। थैंक यू सर। तो हम फिर से एक बार धन्यवाद करेंगे रिचर्ड डिक्सी जी का और सिस्टर वांगमो डिक्सी का। उन्होंने हम सबको अपना प्यार दिया और हम सब के अंदर धम्म के प्रति जो एक ऊर्जा है उसको संचालित करने में जो उनका योगदान है, वो उसकी प्रेरणा है, वो सब हमें दिया। और जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं हमारे संस्थान से, तो अनवरत कई सालों से जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, तो सिस्टर वांगमो डिक्सी का कितना महान वर्क है, कितना महान वर्क है कि वो इस पवित्र भूमि में भगवान बुद्ध के वचनों के फिर से एक बार संगायन के लिए इतना बड़ा प्रयास कर रही हैं। तो उनको देख के हमें लगता है कि हम तो अभी सोचना शुरू किए हैं और हमें अभी आगे बहुत प्रयास करने की जरूरत है। हमारे बीच में जापान से भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनमें से श्रीमती रश्मि मनवटकर मैडम से, सिस्टर से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया वो आए और हम सबके बीच में अपनी बात रखें। और विशेष रूप से जो ये आयोजन है इस नव वर्ष के प्रारंभ में, हम सभी को शुभकामनाएं एक दूसरे को भी देने के लिए, प्रेषित करने के लिए, और हम अपने धम्म एक्टिविटीज को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से 2025 में 26 में हम इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग के कार्यक्रम को भारत में आयोजित करेंगे। उसमें जो चैलेंजेस अभी रिचर्ड डिक्सी जी बता रहे थे, उनसे कैसे मीट आउट करेंगे, इन सब के बारे में हल्का सा प्रकाश अगर डालेंगे या उनका जो भी विजन होगा, तो हम आमंत्रित करते हैं सिस्टर रश्मि मनवटकर फ्रॉम जापान। हाय, जय भीम सभी को। क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? हाँ जी, आ रही है सिस्टर, हम लोग आपको सुन रहे हैं। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। और बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य राजेश चंद्र जी को, जिन्होंने मुझे आज की मीटिंग के लिए इनवाइट किया। और मैं तो बहुत खुश हो गई। और जब भी एक्चुअली मैं आचार्य राजेश चंद्र जी से फेसबुक से जुड़ी हुई हूँ, और जब भी त्रिपिटक संगायन का आचार्य फेसबुक पर फोटोज एंड वीडियोस डालते थे, मैं बड़े उत्सुकता से देखती थी। और मैं इतना मतलब अपने आप को समझती थी कि मैं क्यों नहीं हूँ वहां पर प्रेजेंट, क्योंकि इतना अच्छा पुण्य कार्य हो रहा था वहां पर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वहां पर प्रेजेंट रहना चाहिए था। तो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ। और मैं बहुत खुश हो गई जब ये न्यूज आचार्य राजेश चंद्र जी ने फेसबुक पे लिखा कि 2025 और 26 का त्रिपिटक
चैंटिंग का जो आयोजन है वो भारत कर रहा है, तो मैं भी बहुत खुश होगी और मैं कोशिश करूंगी कि इस संगायन में जो भी मेरी तरफ से सहकारी हो सकता है मैं जरूर अपने तरफ से करूंगी और कोशिश करूंगी कि उस संगायन में मैं भी शामिल होने की कोशिश करूंगी। तो आप सभी लोगों को जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये त्रिपिटक संगायन ऐसे ही चलता रहे। तो इसके लिए आप सब लोगों को सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भगवान बुद्ध ने अभी हम सिस्टर वांगमो डिक्सी के संबोधन के बाद जैसे बता रहे थे कि भगवान ने खुद कहा है कि दो चीजें बहुत ही मुश्किल होती हैं। एक तो उपासकों के लिए किसी भिक्षु संघ के लिए कोई सेवाएं देना, और दूसरा भिक्षु संघ के लिए भगवान ने कहा है कि उनके लिए जो ये मार्ग है, मार्ग को तोड़ने वाला, उस पे अनवरत रूप से प्रयास करते हुए उसको पूरा प्राप्त कर लेना। ये दो बहुत ही कठिन चीजें हैं। तो हमारे यहाँ संघ में जो इस समय की जो मीटिंग में मतलब अभी एक समय 50 से ज्यादा लोग थे, अभी 50 लोग हैं। तो हम लोगों ने भगवान के वचनों में बहुत ही कठिन कार्य चुना है, और ये जो कार्य है ये हमारी तो क्या ताकत है, ये जो धम्म की ताकत है और जो त्रिरत्नों का आशीर्वाद है उससे ही ये पूरा होगा। और हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि जो आयोजन हम लोग करेंगे त्रिपिटक चैंटिंग के सहयोग के लिए 2025 में, उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, इसके लिए हमको कुछ ना कुछ संकल्प लेना होगा। इस लिहाज से भी हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में समन्वय सेवा संस्थान के फाउंडर मेंबर श्री विजय कुमार विश्वकर्मा जी हैं, इस समय अमेरिका में हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप आइए और आप भी संक्षेप में, बहुत ही कम शब्दों में संक्षेप में अपनी बात हम सबके बीच में रखें। श्री विजय कुमार विश्वकर्मा। Namo Buddhaya, Jai Bhim, and Happy New Year to everyone. It's very good to see, I guess, each of you. I can feel vibration of Acharya Rajesh Chandra ji, and very much inspired by Sister Wangmo Dixey. What a lovely and deep heart voice. Thank you. I've been in connection with the ANA members for almost, I should say, more than 6 months, and they are doing wonderful job. So very much congratulations to Mr. Pankaj Mishra. You have brought a platform to connect three things: the spiritual aspect of life for Buddhism, the social aspect of life for the people who are away from their motherland like us, and very, very much of an intellectual aspect of in general. So I would like to express my deep thanks to Mr. Pankaj Mishra. And today's talk was just wonderful. It was very hard to realize, oh, it's already more than an hour. It was that quick. So there's a lot of positivism. And with that positivism, I feelingly and want to say thank you to each of you. As far as the Samanvyay Sewa Santhan goes, it has been more than 25 years. This organization has been continuously working. And in the whole process, we came across so many things. We continuously modify, or continuously, I would say, we follow the path of Dr. Baba Saheb Ambedkar and Buddhism, and the power and the energy behind is all coming from that. So there's no doubt about that. And I again would like to say Happy New Year to all, and may our wishes be fulfilled by triple chanting. Sadhu, sadhu, sadhu. Over to you, Mr. Mukesh. थैंक यू विजय, आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात को यहाँ पे रखने के लिए। श्री विजय जी समन्वय सेवा संस्थान के फाउंडर मेंबर हैं और बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही जागरूक
हैं धम्म के प्रति और बाबा साहेब के, स्पेशली बाबा साहेब के मिशन के प्रति। जो बाबा साहेब चाहते थे कि जो भारत के उनके अनुयायी हों, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध हो। तो आज ये एक छोटी सी मीटिंग में हमें देख रहे हैं कि हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल से बहुत सारे लोग छोटे ही रूप में सही जुड़ना शुरू हो गए हैं। आगे ये जो कारवां है ये बढ़ता चला जाएगा और आप सभी का इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में श्री अमल काम्बले साहब हैं, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप आइए और चंद शब्दों में अपनी बातों को हम सबके बीच में रखें। श्री अमन काम्बले सर। श्री अमल काम्बले साहब, हेलो, आवाज हाँ इंडिया आवाज आ रही है? आप सब लोग इनके बारे में जानते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, हम आपको अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं। श्री अमन काम्बले सर। आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम और नए साल की भी आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सो ऑल ऑफ यू हैव अ विश यू हैप्पी India means that we have to organize International Tipitaka Chanting ceremony on 2025-2026. So I think this is the first time we are going to organize this Tipitaka Chanting ceremony. I think we need to, as sister said, there are so many groups in India. There are so many Bhikkhu Sanghas in India, even so many organizations in India. So we have to come together. We have to bring in one platform and one umbrella. So we have to start working. And I think this 2023 and 24, we have 2 years left. So we have to bring them on different locations, like we are organizing in different part of the country. So we have to bring them in different locations, and we have to just know them, that how we are going to organize this program and how other countries are organizing this program in India. And now we have to take lead this year. So I think we have to find out some like-minded groups, and also we have to coordinate with all the Buddhist organizations, especially those very seriously working in the field of Buddha. And as we all know that Buddhism is based on friendship. Friendship is so much important. So we have to bring together and we have to coordinate with them so that we can definitely organize, as Dr. Ambedkar said, ki low aim is crime. So we have a very big aim. We have a very big aim, as Acharya Chandra said, that we have to organize at any cost. So we start working since today. We'll collect all the groups. I think I suggested that before organizing the seminar, we have to come together at one place. We have to invite all the peoples at one place, and we have to discuss the strategy and planning, because there are so many issues, there are so many things we have to find out the way. So definitely we will do it. So this is the first kind of a meeting. Definitely we'll have some physical meeting too, and and we'll have one group, and we'll come together at any center place. We'll invite all the people from India at that place, and we told them that we are going to organize this international chanting ceremony in 2025. So thank you all of you, and we all who are joining at this moment, we all are the organizers of this event, and we have to organize in a very positive note, very positive sign. So we started working, and thank you very much for inviting me. Thanks very much. थैंक यू काम्बले सर। आपने जो ये मनसा अपनी बताई, जो आपने कि भारत में बहुत सारे ग्रुप को एक प्लेटफॉर्म पे ले आना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
ये कैसे पूरा होगा हम तो नहीं जानते इसको, लेकिन इतना हम लोगों को जो भरोसा है कि बुद्ध धम्म के लिए अगर हम अपनी निष्ठा के साथ किसी काम को करेंगे तो धम्म ही वो रास्ता निकालेगा। तो हमें धम्म का रास्ता नहीं छोड़ना है, तो धम्म अपना रास्ता निकालेगा। जो भी कोई चैलेंजेस होंगे उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। और हमारे बीच में समन्वय सेवा संस्थान की डिफरेंट यूनिट्स हैं, जहां से कानपुर से, मैं स्वयं कानपुर से, और हमारे सभी सहयोगी श्री अजय कुमार जी जो मुख्य रूप से कानपुर में संस्थान के कार्यक्रमों का के लिए आयोजन करते हैं। श्री घनश्याम जी झांसी से हैं, राकेश कन्नौजिया जी और उनकी पूरी टीम जो सबसे समृद्ध टीम संस्थान की। ऐसे लखनऊ से हमारे बहुत सारे संस्थान के फ्रेंड्स जो इसमें जुड़े हुए हैं। आप सब ने जो लोग इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग प्रोग्राम में बोधगया गए हुए थे, वहां से वापसी में हम सब ने जब ये संकल्प किया कि 25 और 26 में इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग का आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा, तो इसमें से हमारे बहुत सारे साथियों ने ये संकल्प किया कि हम अपने इनकम का जो 1 मंथ की जो हमारी इनकम है, 1 माह की जो हमारी इनकम है, किसी की 1 लाख, किसी की 1.5 लाख, किसी की 60,000, जिसकी जो भी इनकम है, बहुत से लोगों ने ये संकल्प वहां सार्वजनिक रूप से सबके सामने बताया कि हम लोग अपने 1 महीने की ये जो सैलरी है या जो हमारा 1 महीने का वेजेस है, ये हम सब इस महान कार्य के लिए देंगे। कुछ साथियों ने 2 लाख का, किसी ने 1 लाख का भी संकल्प लिया कि हम इतना कलेक्ट करेंगे। किसी ने 10 लाख का संकल्प लिया। सर आपने 10 लाख का किया है? हाँ, मैंने बताया। हाँ, मेरा याद है, कहा हो सकता है अगर धम्म ने चाहा तो 10 लाख से भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके बारे में हमने काम करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए ये मीटिंग का आयोजन भी सर ने रखा है कि जिन जिन लोगों ने संकल्प लिया है वो उसके लिए काम करना शुरू कर दें। और एक दूसरे से हमें यही जानना है कि हम लोग कैसे इसमें आगे बढ़े, क्योंकि 10 लाख 1 लाख ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो एक बहुत हम लोगों ने विशाल आयोजन, एक बहुत बड़ा महान आयोजन, एक बहुत बड़ा पावन आयोजन का ये जो बीड़ा उठाया है, ये कैसे पूरा होगा। तो ये केवल हमारे धम्म के प्रति श्रद्धा समर्पण से पूरा होगा। संक्षेप में हमारा समय काफी ज्यादा हो गया, 1 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपनी बात कही है और बड़े अच्छे से कही है। हम 1-1 मिनट में चाहेंगे अपनी सभी यूनिट से, और शुरुआत करेंगे अपने प्रतापगढ़ की यूनिट से कि हमारे प्रतापगढ़ के जो समूह नायक हैं वो कृपया सह समूह नायक श्री राकेश जी। अच्छा, also Sri Rajesh Chandra sir is saying that announce the about the contribution in English also, because Sister Wangmo Dixey is also connected this time. So we'd like to inform you, sister, that the members of Samanvyay Sewa Sansthan had passed a resolution and decided that they will contribute their 1 month salary for this international Tipitaka Chanting program, which will be organized in the 2025. And some of them also determined that they will contribute 3 lakhs, they will collect 10 lakhs. So we are in the process of that, and we have started the process till from today now. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री राकेश कन्नौजिया जी से कि वो संक्षेप में 1 मिनट में अपनी बात कहें, समय बहुत ज्यादा हो गया है। श्री राकेश कन्नौजिया जी, और इसके बाद हम अपने इस कार्यक्रम में मुख्य जो आयोजन में सारी भूमिका कर रहे हैं श्री पंकज मिश्राम साहब और डॉक्टर शीतल मिश्राम साहब, उनको हम लोग सुनेंगे। श्री राकेश कन्नौजिया जी। तो सर सबसे पहले सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। 9 वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं। और ये निश्चित रूप से ये वर्ष संकल्पों का वर्ष है, और जिस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से परम पूज्य बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और
जो हम लोगों ने सर संकल्प लिए थे, तो संकल्प तो हम लोगों ने जब जेटीएन वैली की यात्रा पे हम लोग निकले हुए थे, तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे संकल्प हुए। उस संकल्पों में कुछ ने अपने अपने सर ने जैसा बताया कि कुछ लोगों ने अपने अपने तरफ से अपने डोनेशन को घोषणा की कि हम इतना जो है दान में हमारी ये अपनी संकल्प हैं। मगर इसके साथ साथ एक जो हमारे श्रद्धावान लोगों ने संकल्प ये भी लिए हैं कि उन्होंने एसआईपी खुलवा ली है। जो एसआईपी का अकाउंट है कि 2026 तक हमारा इतने का एसआईपी पर मंथ डोनेट करने का, हर मंथ का संकल्प को जोड़ने का है। और मुझे अच्छा लगा जब सर ने घोषणा की थी, तो उसी समय जो विशेषकर महाराष्ट्र के लोग थे और अन्य जगह के भी जो हमारे उपासक लोगों ने हमें व्यक्तिगत रूप से हमें संपर्क करके हमें नंबर दिया उन्होंने, और नंबर देकर उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम इस संकल्प में अपनी सहभागिता और भागीदारी चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो संकल्प है, इसमें हर व्यक्ति, हर उपासक अपनी सहभागिता चाहता है, और ये पार्टिसिपेशन निश्चित रूप से हमें जो है हमारे कार्य को, हमारे संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इतना बढ़िया जब हमारे श्रद्धेय चंद्रा सर जो हमारे संघ नायक हैं, जो हमारा संकल्प को और भी मजबूत बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम संकल्प पूरा करेंगे। इन्हीं जो है शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से सभी को पुनः नए वर्ष की मंगल कामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। धन्यवाद राजेश सर। राकेश सर, हम अनुरोध करेंगे लखनऊ से अवधेश या समृद्धि से, आप में से कोई भी एक मिनट में अपनी बात, अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करें जल्दी से। श्री अवधेश जी। अक्सर एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जितने मैरिड हैं ना, जब घर पे रहते हैं तो हमारा गला खराब ही हो जाता है। सभी को मेरा और सभी को क्या मेरी आवाज आ रही सर? हाँ हाँ आ रही हेलो, आ रही है आवाज। ये ऐसा संकल्प है, और जी जी जी, और ये इतना अच्छा संकल्प लिया, और ये संस्थान के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही 25 और 26 में इस संगायन का आयोजन करेंगे और सबकी सहभागिता होगी। मेरे सबको मेरा नाम बुद्धा जी। थैंक यू। धन्यवाद अवधेश जी। अवधेश जी हमारे जो संस्थान की ऑनलाइन एक्टिविटीज होती हैं उनका सारा संचालन, और इसके अलावा भी जो ऑफलाइन भी एक्टिविटीज होती है उसका भी उत्तरदायित्व अवधेश जी और उनकी पूरी फैमिली पे रहता है। थैंक यू अवधेश जी, आपको इन सब के लिए। और हम कानपुर से अजय जी से अनुरोध करेंगे कि वो कृपया संक्षेप में 1 मिनट में अपनी सारी बातें। 1 मिनट में अजय जी। अजय कानपुर से। हमें लगता है अभी इस समय अजय जुड़े थे, अभी इस समय नहीं है। झांसी से श्री घनश्याम जी से हम अनुरोध करेंगे, कृपया 1 मिनट में वो अपनी बात कहें। श्री घनश्याम जी झांसी से। जी, सभी उपस्थित संघ नायकों, मुख्य रूप से श्रद्धेय रिचर्ड डिक्सी सर, सिस्टर वांगमो डिक्सी, और हमारे समन्वय सेवा संस्थान के सभी जनपदों के प्रभारी और सदस्य जनों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। संगठन के उद्देश्य, संगठन का जो इतना संगठन के द्वारा जो संकल्प लिया गया है, ये संस्थान के लिए ही नहीं बल्कि समूचे
भारत देश के लिए और हमारे बुद्धिस्ट वर्ल्ड के लिए ये जो बहुत गौरव का ये संकल्प है और इसको सफल बनाने के लिए हम संगठन के ओर से ये उद्देश्य की को सफल बनाने के लिए हम 5 सूत्री कार्यक्रम हम अपने स्तर से रखने का प्रयास करेंगे कि उसमें ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखेंगे। हाँ, उसमें सभी लोगों में आपस में यूनिफॉर्मिटी रहे और हम पार्शियल ना हो और सभी को साथ में सभी के साथ में कोऑपरेशन विद हार्ट एंड हार्टली करेंगे और इस डिसिप्लिन इज मस्ट, तो डिसिप्लिन का ध्यान भी रखेंगे और बिहेव लाइक जेंटल और एंड फ्रेंडली विद ईच अदर मेंबर्स। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपने ये भी जैसे भगवान बुद्ध ने 10 पारमिताएं की, ये अपना संकल्प पूरा करने के लिए ये हम इन 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने संकल्प को पूरा करेंगे। इस विश्वास के साथ हमारे संघ नायक श्रद्धेय श्री राजेश चंद्र जी, मुकेश चंद्रा जी और हमारे जनपद पे सभी ब्रांच के जनपद प्रभारी श्री राकेश कनौजिया जी, बहन लीलावती जी और कानपुर से अजय जी, लखनऊ से श्री अवधेश कुमार जी जो मेरे दामाद भी हैं मेरी बेटी है समृद्धि, तो इनको हम हर तरह से समर्पित भावना से इस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। इस विश्वास के साथ पुनः फिर सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद घनश्याम जी। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम सबके इस मीटिंग में पूज्य धम्मदीना अय्या जी जुड़ चुकी हैं। अय्या जी का हमको वंदनामी करते हैं और उनसे हम ब्लेसिंग्स लेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की मंगल कामना अय्या जी के द्वारा होगी। हम अनुरोध करेंगे श्री पंकज मिश्राम साहब से, जो कि आना यूएसए से हैं, और उनकी श्रीमती जी डॉक्टर शीतल मिश्राम। या दोनों युगल मिश्राम युगल जो है धम्म के प्रति और बाबा साहेब के मिशन के प्रति बहुत ही अच्छा और बड़ा ही संगठित आंदोलन अमेरिका में चलाए हुए हैं। ये देख के हमें बड़ी खुशी होती है कि जो बाबा साहेब का मिशन है, जो धम्म का मिशन है, वो पूरे विश्व में इस तरह से हो रहा है। और हमारे लिए भी गौरव की बात और खुशी की बात है कि हम भारतीय संघों का और अंतर्राष्ट्रीय संघों का एक साथ समन्वय हो रहा है। तो हम अनुरोध करेंगे श्री पंकज सर से कि कृपया वो आएं और अपनी बात हम सबके बीच में संक्षेप में प्रस्तुत करें। श्री पंकज सर। नमो बुद्धाय, जय भीम ऑल। सबसे पहले तो मैं भिक्खु संघ से जुड़े हुए भंते और भिक्खुनी अय्या जी का वंदन करता हूँ। So after that, I wanted to congratulate Sister Wangmo for her PhD. Also wanted to put my congratulations to our Acharya Rajesh Chandra sir for his birthday. And I wanted to congratulate and provide happy news and happy new year to all the members. And the most important thing is that we wanted to reiterate ourselves, reassure ourselves that the aspiration that we have taken, we will be very successful in completing that. And we have a very able leader in our aspirations who has bigger aspirations than this. He wanted to see India hosting 7 Buddhist councils. So that kind of thoughts have to come from a
a highly inspired person, and we are happy that Chandra sir always provides those thoughts and keeps those thoughts in his minds, and he works towards that. And we hope he would be able to see that within his lifetime, he get that much long life, and whenever that happens, he would be there to witness it. And that's what our sincere wish for the day today. And I just wanted to reiterate that as Ambedkar Association of North America, we will be wholeheartedly supporting this cause. I'm representing right now, I have also one of our board members, Vivek Chavan, joining us. There were other board members too. Our president was here some time back, Ms. Smita Dange. She had to leave now, but so all the board members or ANA team members were here. Vijayji is there anyway. So we wanted to kind of reiterate our commitment. We wanted to make sure that we are there, and all these difficulties that have been identified is very good that we know our path is difficult. We know our difficulties ahead of time, and we are trying to find out ways to overcome that. And we will see a very successful completion of our aspiration. With that thought, I wanted to again congratulate all of us, congratulate India to come up and step up ahead of taking up the leadership, taking the organizing role for a very important event that has been happening throughout this 18 years, and we are grateful to see this continuing in India with Indian leadership now coming up. That would be a very nice thing to see that. So with that, I wanted to again congratulate and thank you very much all. Namo Buddhaya, Jai Bhim. तो मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा, शायद आप में से काफी लोग जानते हों पंकज सर के बारे में, कि आपने यूनाइटेड स्टेट में 3 स्टेट्स में बाबा साहेब के जयंती को इक्वलिटी डे के रूप में मनाए जाने के लिए गवर्नमेंट से एक ऑर्डर जारी करा दिया। तो हम सब ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में एक काशीराम पैदा हो चुके हैं। काशीराम साहब ने पूना में अब यही आंदोलन शुरू किया था और यहीं से वो आगे बढ़े थे कि वहाँ लोकमान्य तिलक की तो जयंती है, लेकिन बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए अवकाश नहीं दिया जाता है। तो सर को हम, पंकज सर को एक ऐसे महान लीडर के रूप में वहाँ देख रहे हैं, यह हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम डॉक्टर शीतल मिश्राम से अनुरोध करेंगे कि कृपया वो भी हमारे बीच में आए और वो भी हमें अपने एक्सपीरियंसेस से हम सबको अवगत कराने के कृपा करें। डॉक्टर शीतल मिश्राम। हाँ जी सर, एक बात और कहना चाहूंगा कि इस चैंटिंग के लिए, इस साल की चैंटिंग के लिए हमें जितना सहयोग मिला है मुकेश मेश्राम सर से और मैडम किरण बालाजी, अभी तक मैंने देखा कि वो 1-1.5 घंटे से वो इस मीटिंग में मौजूद थी और बड़ी श्रद्धा से वो ये सब बातों को और संकल्पों को सुन रही थी और अपने भी विचार उन्होंने रखे। और तो ये देखकर ही हमें बड़ा खुशी से गदगद हो जाते हैं कि इस देश में धम्म के प्रति धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ रही है, लोग इसके तरफ जा रहे हैं और इसको देखते हुए हमें इस बात का भी एक एहसास हो जाता है कि हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है और इस बात की खुशी भी होती है कि शायद जिम्मेदारी के साथ अगर श्रद्धा पूर्वक हम ये काम करें तो हम इसे सफल भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें देखते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं अभी शीतल को अनुरोध करूंगा, वो अभी थोड़ा दूसरे इसमें गई हुई है, 2 मिनट में आके वो अपनी बात साझा करेंगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, कृपया बाकी लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। हमारे बीच में कानपुर से हमारे श्रद्धालु उपासक और समन्वय सेवा संस्थान के एक एक्टिव मेंबर हैं, जिन्होंने कानपुर में काफी अच्छा प्रयास किया है। अभी वो जुड़े थे, उनको
आवाज नहीं सुनाई आ पा रही थी। अभी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं जुड़ गया हूँ। अजय, आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप आइए और संक्षेप में 1 मिनट में अपनी बात यहाँ सबके बीच में रखने का प्रयास करिए। श्री अजय जी, कानपुर से। नमोदय सर, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक। आपके आसपास कुछ लोग कनेक्टेड हैं, उनके स्पीकर्स बंद करा दीजिए। आवाज में इको इसी वजह से हो रहा है। सभी को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जिस दिन ये मैंने श्री मुकेश चंद्र आनंद सर से ये सुना, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि चंद्रा सर ने जो बोधि वृक्ष की छांव में 2025-26 में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन का आयोजन करने का भारत की ओर से जिम्मेदारी ली है, तो मैं थोड़ी देर सुन करके शांत सा रह गया। मैं कल्पना करने लगा मन में कि कितना हम भारत के लोग कितने सौभाग्यशाली होंगे कि ये अवसर हम लोगों को भी मिलेगा, उसमें धम्म सेवा करने का मिलेगा कि हम लोग जाकर के वहाँ पहले से जाएंगे, जो भी हम लोगों के अंदर श्रद्धा होगी वैसे जाकर के सेवा करेंगे। हमें भी अवसर मिलेगा कि आपको ये करना, वो करना, ये करना। तब से बहुत मन मुदित है। दूसरे दिन मैंने चंद्रा सर के वॉल से इसको पढ़ा और हम समन्वय सेवा संस्थान कानपुर, इवन हम समस्त भारत के लोग इसके लिए कमिटमेंट होंगे। अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन को सफल करने के लिए तन मन धन से जिस भी तरीके से हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा, अथक प्रयास करेंगे और हम अपने कमाई का, वेतन का 1 महीने की सैलरी जो है इसके लिए दान करेंगे और भी लोगों से दान के लिए उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद अजय जी। और अजय जी बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं कानपुर में। आपने एक बहुत ही अच्छे विहार का वहां पे निर्माण कराया है और वहां पर निरंतर धम्मा एक्टिविटीज होती रहती हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद और आप ऐसे ही धम्म कार्य में लगे रहें। हमारे बीच अय्या धम्मदीना जी जुड़ी हुई थी। उन्होंने अच्छा, उनका मैसेज आया है कि वो बात नहीं कर पाएंगी, कुछ वहां पे हो सकता है कोई किसी तरह की असुविधा हो। तो अय्या जी की शुभकामनाएं, उनकी मंगल कामनाएं हमारे पूरे समूह के ऊपर हर समय बनी रहती हैं। और अय्या जी की आप वाणी हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन उनकी मंगल कामनाएं हमारे हृदय में गुंजायमान हो रही हैं। हमने बोध गया में उनकी मंगल कामनाएं प्राप्त किया था, हम उसको आज भी महसूस कर रहे हैं और वो हम सबको अपनी मंगल कामना वहां से ही प्रेषित करेंगी। अंत में इस मीटिंग को ब्रीफ करते हुए, हम ब्रीफ करने के लिए सारी इसमें और सबका धन्यवाद के लिए अपने संघनायक श्री राजेश चंद्रा सर को अनुरोध करेंगे कि वो आए। इसके पूर्व हम डॉक्टर सिस्टर शीतल मिश्राम जी से अनुरोध करेंगे, यदि वो फ्री हो गई हों तो हम उन्हें भी सुनना चाहेंगे। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। It's very pleasure to attend such an occasion, a meeting where all the dignitaries are here, and it's an honor and it's a proud moment when we are announcing that India will be hosting the Tipitaka Chanting ceremony on such an auspicious occasion of Baba Saheb's Dhamma Diksha ceremony. So I think it's a very honor for India and all of us to pay and salutation to our father, Dr. Baba Saheb Ambedkar. मैं हिंदी में भी अपनी बात रखना चाहूंगी कि हमें बहुत गौरव की बात है कि हमें ये मौका मिल रहा है भारत का प्रतिनिधित्व करने का और सारे विश्व में बाबा साहब की ये बात भी फैलाने का कि हम उनका जो संदेश है कि सारे भारत को बुद्धमय बनाएंगे। तो एक तरह से हम ये संदेश देंगे कि हम भी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम अपना योगदान करना चाहते हैं धम्म की राह में चलने के लिए और सभी को प्रेरित भी करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को और राजेश चंद्रा सर जी को जो हमें हमेशा एक योग्य मार्गदर्शन उनका मिलते रहता है हमें, तो बहुत बहुत और हमें बहुत खुशी होती है कि हमें सम्मिलित करते हैं इतने प्यार से, इतने अपनत्व से हमें हमेशा सम्मिलित करते हैं, अपने इस मौका देते हैं।
और हम व्यक्तिगत रूप से और संस्था की ओर से अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के रूप से हम जो भी इसमें हमारा सहयोग रहेगा तो हम जुड़ते रहेंगे हर बार। तो सभी को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। हमें सभी को हम सब धम्म की राह पे इसी तरह आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सिस्टर। अंत में इस पूरे मीटिंग से, इस पूरे कार्यक्रम के कंक्लूजन के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्री राजेश चंद्र सर को, कृपया वो आए और इस पूरे कार्यक्रम का समापन कराते हुए और सभी का आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। श्री राजेश चंद्र सर। So much thanks for receiving this invitation, particularly Dr. Richard Dixey and Dr. Wangmo Dixey. Though she is in very much interior, as she told me that she is in mountains and it's almost impossible to be connected through internet. But see the power of the triple gem. She is connected with us since last 1.5 hours. And I'm very much grateful to Commissioner Madam, Kiran Bala Chaudhary Madam. Not only she is joining here, she joined us at Bodh Gaya also under the Bodhi tree. And I must say thanks to ANA members, Ambedkar Association of North America, Dr. Sheetal Mishra and Mr. Pankaj Mishram and this daughter Rashmi from Baba Saheb Dr. Ambedkar International Association for Education, Japan. She is working a lot there. And I must say thanks to Sri Mukesh Kumar Meshram sir, Director General Tourism. Just in the morning, I visited him at his residence, and he asked me that you give me a letter so that I may spare minimum 50 lakhs funds for every year for the Tipitaka chanting at all the sites in UP. So very soon I will discuss on this matter with Sister Wangmo and Dr. Richard Dixey. Before concluding and saying thanks, I am thankful to Mr. Raman Kamble. On a very short notice, he is ready to come with us. There are two requests from all the Indian organization, and these requests through Rajesh Chandra, through Samanvyay Sewa Sansthan, from all the organizations, and since last many years, that this Tipitaka chanting, if may be shifted either in November or in the month of February. This request I will request in writing also. As for climate and weather at Bodh Gaya in December is too much chilled, and for Indian climate, most of the people who are old age or sick, they hardly can visit and stay there for 10 days. So just keep in mind. And the second request I want to convey to Dr. Richard Dixey and Wangmo Dixey, that this all Ambedkarite organization of India, they want to donate a statue of Baba Saheb Dr. Ambedkar to install it at Dharma College. Just you have to keep in mind under your purview and consideration. I am very much thankful all the members of Samanvyay Sewa Sansthan who attended from different units, Kanpur, Jhansi,
Pratapgarh, Raebareli, Allahabad, Lucknow itself. And they all attended it very well. And I found it a golden day. I say it a golden day. It's a Sunday and it's 1st January. Sunday and 1st January. So I thought it's the best day to resolute a very big mission, a big vision. I must say thanks to Mr. Mukesh Chandanan sir, who is conducting the program today, and all the Upasaks and Upasikas who attended. I am thankful to Venerable Bante Prashil from Sanghkaya Foundation, Chairman. He stayed there at Bodh Gaya for all 10 days. And not only he, but all the Indians, when they attended Parita chanting on 11th December evening, everyone is very much overwhelmed and excited to hear that India is going to be organizer. And I know it's going to happen. It's not my wish, it's the wish of the Triple Gem. It's the wish of the Mahan, great Bodhisattva Baba Sahib. It's the wish of the Bodhisattvas. So much thanks for attending today's webinar, this program, and particularly Mr. Pankaj Mishra, who provided us this Zoom link, and Mr. Avdesh Kumar, who is always joining us all. So much thank you, everybody. And we will conclude it with the Dhammapalan Gatha. Mr. Mukesh will conduct it, please. हमारे संस्थान का ये सिग्नेचर है कि हम अपने हर कार्यक्रम की शुरुआत, हर कार्यक्रम का अपने प्रारंभ त्रिशरण और पंचशील से करते हैं और इसका समापन बाबा साहेब के द्वारा संकलित धम्मपालन गाथा से करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि सस्वर अपने माइक को म्यूट रखते हुए जहाँ पे भी हैं आप स्वस्वर सस्वर उच्च स्वरों के साथ धम्मपालन गाथा करें और धम्मपालन गाथा के पूर्ण होने के साथ ही आधिकारिक रूप से इस मीटिंग का समापन होता है। सब पाप सकरण कुशल सुख संपदा सचित परियोदपनम् एतं गुणान शासनम् धम्मं चरेत सुचरितं नतं दुसरितं चरेत धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमहि च न तावता धर्मधरो यावता बहुभाषति यो चापंपि सुत्वानन् धम्मं कायेन पश्यति सर्वे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नथि मे शरणं गयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं गयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं गयं संगो मे शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेण होतु मे सर्वमङ्गलम् साधु 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 नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु। Thank you all for joining, please.
We will conclude today's meeting, sir. Thank you.